Today I'll be talking about the third verse of the Sri Shikshastakam, which translates to one should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking oneself lower than the straw on the street. One should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige, and should be ready to offer all respect to others. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. Here it is explained that we have a tendency to refuse or to go against Krishna's instructions. We are always committing spiritual suicide, and in order for us to develop a closer relationship with the Lord, we must accept and understand our position. The comparison of being more tolerant than a tree is given here because a tree is just always staying there, minding its own business. If it does not receive any water, it doesn't complain. If someone takes a tree's flowers or fruits, it doesn't complain and it remains silent. It is our goal to remain tolerant in this material world in order to surrender to Krishna. And by following these instructions, our mind will become clear and we'll be able to chant the holy name properly. Now let us all chant one round together. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Jaya Krishna Padaya Prashtaya Bhutare Srimati Srimate Bhaktivedanta Swami Yogendra Swami Namaste Namaste Prabhupada Sakti Guru Charane Namaste Krishna Srinivadi Vishnu Patsa Krishna Dushatayani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Thagadadar Shri Sadi Gaur Jai Bhaktivedanta Shri Krishna Hare Chaitanya Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Ram Hare Krishna Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Krishna Hare Ram Hare Krishna Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, 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 Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Krishna Ram, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Krishna, Krishna Hare 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 Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Hare.
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasati Gaur Bhakta Binda Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanya Jagaditya Krishnaya Govindaya Namo Namah Namo Mahavadanyaya Krishnaya Krishna Krishnaya Chaitanya Namini Gauratsai Hare Krishna everybody. So welcome to our Saturday program. Last week we been studying about the demigods. So we started the previous weeks. We started studying about the demigods. We started with Lord Shiva. Then we talk about Parvati Mata, Durga Mata last week. Now we're going to talk about today would be about who knows. Anybody has any idea? I mentioned last week. So if anybody has any idea, please you प्रभु can. शिव जी Shivji ka ho gaya. We did Shivji already. Anybody else? Nobody knows? Brahma. No, not Brahma. Now you can see. So we're going to talk about Tulsi Maharani, Tulsi Devi. Shri Vindavai Tulsi Devai Pravi Kesava Sacha Vishnu Bhakti Padi Devi Satyavate Namo Namaha Shri Vindavai Tulsi Devai Pravi Kesava Sacha Vishnu Bhakti Padi Devi Satyavate Namo Namaha Shri Vindavai Tulsi Devai Pravi Kesava Sacha Vishnu Bhakti Padi Devi Satyavate Namo Namaha. So Vindavi Tulsi Maharani ki jai. So look at this wonderful Tulsi Maharani. Can you see this Tulsi? I never seen such big Tulsi. Anybody seen this type of Tulsi before? Oh, see, the devotees are so big, such a big Tulsi tree. So every day in the morning after Mangalarti, after Nashing Arti, everybody in the temple, they worship Tulsi Devi. And anybody has experience of worshiping Tulsi Devi at temple? Samira? yes प्रभु जी Did you worship Tulsi? Did you ever do Tulsi Puja, Tulsi Arti at the temple? not in the temple because only the initiated devotees are allowed. At my home I have done. Oh, very nice. So you know the story, you know the song? Tulasi Krishna Priyasi Namu Nama. Yes प्रभु जी I may like don't remember it wholly but yeah I know most of it. Yes, let's ask Prachi. Prachi? Hare Krishna Prachi. हो प्रभु जी आई Do you know the song? Tulasi Krishna Preyasi Namo Nama. Remember the song, Prachi? नो प्रभु जी Oh, you don't know. Any Riya? Do you know the song that we sing at the temple? Riya. Radha Krishna Seva Pabu E Abhilashi Namo Nama. Prabhuji, You know, Riya? Remember? what's your question? Do you know that song that we sing, the devotees sing for the during the Tulsi Aarti? I Namo think Nama. Sri Vishnu Priyasi. No, It's like it's to see Krishna. Prayasi Namo Nama. It's a yes, Bengali song. Jeto Mora Sharanalo Taravancha Punoho Kripa Kori Koro Tare Vrindavana Vashi Namo Nama Tulasi Krishna Prayasi Namo Nama Mora He Abhilash Bilash Kundi Deovash Nayane Hari Bosada Yoga Ruparashi.
Namo Nama. Namo Nama. Tulasi Krishna Tulsi Prayasi Namo Prayasi Nama. Namo Nama. E Nivedana Dharo Sakirano Koro. E Nivedana Dharo Sakirano Koro. Seva Adhikara Dije Karo Nij Dasi Seva Adhikara Dije Karo Nij Dasi Namo Nama. Namo Nama. Tulasi Krishna Prayasi Tulasi Namo Nama. Prayasi Namo Nama. Dina Krishna Dase Koi Ye Namo Raho Dina Krishna Dase Koi Ye Namo Raho Shri Radha Krishna Seva Preme Sada Ye Navashi Shri Radha Krishna Seva Preme Sada Ye Navasi Namo Nama. Actually, Shri Radha Govinda Preme Sada Vyasi. So this is a very beautiful song that we all sing in the morning and we worship Tulsi. So Vaishnavas, today we're going to study about the glories of Tulsi Maharani. And you'll see in India, the lyrics Haribo. and the translation is available on the chat. Oh, you can. Oh, you want to read the translation, Mataji? No. I don't want. I just to inform the students they can see and copy Oh, from the chat. yeah. Anybody who wants to read the translation? Nobody wants to read the translation. Janubi, you want to read the translation? Yeah, I can read it. Yeah. O Tulsi, beloved of Krishna, I bow before you again and again. My desire is to obtain the service of Sri Sri Radha and Krishna. Whoever takes shelter of you has his wishes fulfilled. Bestowing your mercy on him, you make him a resident of Vrindavan. My desire is that you will also give me a residence in the pleasure groves of Sri Vrindavan Dham. Thus, within my vision, I will always behold the beautiful pastimes of Radha and Krishna. I beg you to make me a follower of the cowherd damsels of Raj. Please give me the privilege of devotional service and make me your own maidservant. This very fallen and lowly servant of Krishna prays, may I always swim in the love of Sri Radha and Govinda. Hare Krishna. So every day the devotees they take the blessings of Tulsi Maharani, and you'll see some devotees always chant around Tulsi Maharani. So Tulsi in Nectar Devotion, Srila Prabhupada explains in Nectar Devotion that Tulsi, and this is from the Puranas, Tulsi is auspicious in all respects simply by seeing, simply by touching, simply by seeing Tulsi, simply by touching, simply by remembering, simply by praying to, and simply by bowing before Tulsi Maharani, simply by hearing about, or simply by showing this tree. What will happen? There is always auspiciousness. Anyone who comes in touch with the Tulsi tree in the above mentioned ways lives eternally in the spiritual world. Okay, anybody who wants to read the next? Samira, can you read the next part? Yes, Prabhuji. Worshipping Krishna's devotees is an essential feature of devotion to him. Sometimes great devotees appear in forms of other than the human form. One such devotee whose worship is central to the worship of Krishna is Tulsi. She serves Krishna in the form of a plant and devotees worship her in that form. Full of love for Krishna, she can give it to others.
Okay, so worshipping Krishna's devotees is an essential part of Krishna consciousness. So we know that we should worship the deities, Krishna, but worship of his devotees is much more higher. And by doing that, we actually get more mercy from Krishna. So serving Krishna in the serving Krishna is fine, but serving the das anudas, we are always a servant of the servant of Krishna. This is the mood in our parampara, in the Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Just like Janavi was talking about, Tinanapi sunichena tarorapi sahishuna. Amani manadena ketana sadahari. One should chant the holy name of the Lord in a very humble way. How? How can we cultivate humility? We should be able to consider ourselves as low as a straw in the street, thinking oneself as more tolerant than a tree. And a tree is tolerant. If it's cold and hot, still the tree doesn't complain staying outside like that. So it's hard to become like a tolerant than a tree. But Vaishnavas try to cultivate this quality of tolerance and should be devoid of all false prestige. And we don't need prestige. And and one can be in such a state of mind, one can chant the holy name constantly. So if we really get the benefit of chanting, so we should develop humility. And when we worship the devotees of Krishna, then we develop more humility. So we can see that here Tulsi serves Krishna in the form of a plant, and devotees worship her in that form, full of love of Krishna. And she can give that to others also. तो यहाँ पे हम लोगों का बहुत विनम्रता से हम लोग का भगवान का सेवक बनना चाहिए, और विनम्रता से पूर्वक हम लोग पूजा पाठ करते हैं, तो उसका हम लोग फल ज़्यादा अच्छा होता है। हम भक्ति में ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो जो तुलसी महारानी कृष्ण भगवान को अपने कृष्ण का सेवा कैसे कर रही हैं, वो एक वृक्ष के रूप में सेवा कर रहे हैं भगवान का। तो अभी हम देखेंगे कैसे-कैसे किस प्रकार के सेवा होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो तुलसी महारानी के पत्ते हैं, अगर हम भोग लगाते हैं, तो तुलसी का पत्ते इस्तेमाल करते हैं, और भगवान किसी भोग को स्वीकार नहीं करते बिना तुलसी के पत्ता का। अगर तुलसी पत्ता होंगे उसमें, फिर वो स्वीकार करेंगे। बड़े अलग-अलग लीला है। मैं कोशिश करूँगा अगर टाइम मिले आखिरी में एक लीला सुनाएँगे आप लोगों को। We'll tell one lila pastime about the tulsi leaf. Now, in her form as a plant, Tulsi always stays at the Lord's feet and around his neck. Her leaves and flowers decorate his feet and are strung into garlands to be worn around his neck. तो जब से आप देखेंगे मंदिर में, आप देखे होंगे चाहे वृंदावन में कितने जितने भी इस्कॉन टेम्पल में, we always have a tulsi garland. और tulsi garland बहुत सुंदर होते हैं. So even we have garland made of roses and other flowers, लेकिन जो तुलसी जो मंजरी है, हम लोग तुलसी मंजरी को तोड़ते हैं और मंजरों के द्वारा एक सुंदर से भगवान के लिए हम लोग गालन बनाते हैं, हार बनाते हैं, माला बना करके भगवान को पहनाते हैं. The Vedic scriptures say Krishna gives himself to a devotee who offers him merely a tulsi leaf and a palm full of water. तो जब भी हम लोग शालिग्राम पूजा करते हैं, हम हमेशा तुलसी और जल के द्वारा हम लोग अभिषेक करके तुलसी पत्ता अर्पण करना चाहिए, तो ये भगवान प्रसन्न होते हैं शालिग्राम के रूप में खास. ग्लोरीफाइंग तुलसी इन श्रीमद् भागवतम. भागवतम में कहते हैं, आप मेरे पीछे सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं. एवरीबॉडी कैन अनम्यूट देयर माइक, their speaker and their mic. We're going to read this shlok together. So first I'm going to read and then you're going to repeat after me. Okay? Everybody can repeat together. This is from the Shrimad Bhagavatam, तीसरा स्कंद 15 अध्याय और 19वां श्लोक. तो third canto 15th chapter 19th shlok.
So everybody is unmute, and then you're going to repeat after me. I'm going to teach you how to read the shloka. Okay. First, we're going to read one word by word so as you can get it. Okay. Mandara, Mandara, Tara, Kunda, 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 Kura, Botpala, Kuru, Kurabotpala, Champakarna. Champakarna, Champakarna, So now, Champakarna, very good. So we're going to read the whole thing now. Mandara Kunda Kurubotpala Champakarna. Tara Mandara Kunda, Kura Purabodha Bodpala Kampachana. Champakarna. Very nice. Now let's try the second one, okay? Punaga, 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 Naga, Naga, Bak, very good. Bakulambuja, 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 Parijataha, Parijata, Parijataha, Punaganaga, Bakulambuja, Parijataha. Punaga, Naga, Naga, Bakulambuja, Bakulambuja, Parijaja. Parijata. Very Parijata. nice. Very nice. Very good. Now, next one. Gandhe, Gandhi, Gandhe, Archite, Archite, Tulasi, 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 Abharanena, Kabharanina, Abharanena, Tasya, 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 Gandhe Archite, Tulasi, Kabharena, Tasya, Gandhe, Gandhe Arte, Rachite Tulasi Tulsi, Kabharenena Kamharanena, Tasya. Tasya. Very nice. Now, the last one. Yasmims, Yasmin Yasmin, Tapaha, Tapaha, Tapaha Tapaha, Sumanaso, 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 Bahu, 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 Manayanti. Manayanti, Manayanti. Yasminstapaha sumanaso bahumanayanti. Yasmin tapas sumanaso bahumanayanti. Very nice. See, now even it says in the scripture, even if you read one part of the shloka or half of the shloka or one quarter of the shloka, even one word from the Srimad Bhagavatam shloka, you get so much of pious credit to you. So see, even you guys read the whole thing. So this is very beautiful shloka. Let me read the translation. Although flowering plants like the mandara, kunda, kurabaka, utpala, champak, arna, punagaha. Now these are name of flowers. Nagareshka. 1 second. Yeah, Nagakesha, Bakula, Lily, and Parijata are full of transcendental fragrance. They are still conscious of the austerities performed by Tulasi, for Tulasi is given special preference by the Lord, who garlands himself with tulsi leaves. तो ये अनेक अनेक फूलों का महत्व परिजातः is like from Devalok. There's a story where Krishna brings parijata flower to Rukmini. And then the other Satyabhama, they get jealous. Oh, why? I think Satyabhama, yeah. So actually, Krishna brought the Parijata flower to Satyabhama, and then because he wanted to make Rukmini feel jealous. There's a story about that. So this Parijata flower is considered to be a very special flower from Devalok. Among all these different special flowers like Parijata, Bakula, Nagakesha, Punaga, Champakaha, and they have
beautiful fragrance. All these flowers are very special because they have very transcendental fragrance. उसके खुशबू बहुत उत्तम होते हैं. So when you breathe those fragrance, it touches your consciousness in your brain and make you feel so peaceful and simply by smelling that. So even though uh, we have those flowers, among all these flowers, they Tulsi is considered to be the most important of all of them simply because Krishna preferred to have Tulsi garlands of Tulsi leaves. Mm. So in the purport, we see the importance of Tulsi leaves is very clearly mentioned here. Tulsi plants, Prabhupada is saying, is Srila Prabhupada purport. Tulsi plants and their leaves are very important in devotional service. Devotees are recommended to water the Tulsi tree every day and collect the leaves to worship the Lord. So there's a special mantra also when you pluck Tulsi, there's a special mantra that you have to say. And because we consider Tulsi as a devotee, so we don't want to harm her, we have to take care of her nicely. In the winter, we have here in the States, we put them in the greenhouse, or we keep them inside our house. And when it's sunshine is there, we take them outside. And we have some small bugs that come, we have to really take care of those as well. So as it's whole maintenance, we have to be really careful in maintaining Tulsi. Like serving Tulsi Maharani, not like an ordinary plant. So just like Prabhupada is mentioning here, one time in the 80s, Stik Swami remarked, what is the use of watering Tulsi plant? It is better to water an eggplant. By watering eggplant, one can get some fruits. But what is the use of watering the Tulsi? Prabhupada is saying, these foolish creatures, unacquainted with devotional service, sometimes play havoc with the education of people in general. We can see that these people, because of those people are misguided actually. So that's why we have to be very careful when we practice devotional service to avoid those type of criticism. People who criticize, always we should try to avoid them because it hurts. And not only they are hurting themselves, they don't know, but they are hurting us as well. So we don't want to hear any blasphemy about Tulsi Maharani and the devotees especially. That's because that's very harmful to our bhakti, our devotional service. Now, the most important thing about the spiritual world is that there's no envy among the devotees there. द्वेष नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में. जैसे यहाँ पे एक दूसरे को से साथ से जलते हैं, द्वेष करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक संसार में ऐसा नहीं होता. This is true even among the flowers. This is not only true among people, among human form that's serving Krishna, but even among any type of object, animate or inanimate, because everything has consciousness in the spiritual world. So in the spiritual world, even flowers can talk, even flowers can sing, even flowers can dance. So you say in the spiritual world, every step is a dance and every word is a song. So even flowers can sing and even flowers can dance. So which are all conscious and greatness of Tulasi. So we see this is true even among flowers, which are all conscious of the greatness of Tulsi. And everybody is conscious of the greatness of Tulsi Maharani. In the Vaikuntha world, entered by the four Kumaras, even the birds, flowers are conscious of service to the Lord. तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वैकुंठ में जैसे हम लोग प्रवेश करते हैं, वहाँ हर जीव जंतु किसी रूप में है, कोई मुक्त आत्मा, मुक्त जीव, चाहे पशु पक्षी, चाहे फूलों के रूप में, ये सब भगवान के सेवक हैं. तो आइए हम देखते हैं कि a forest named after Tulsi. Let us see. Who knows about Vrindavan? Everybody knows Vrindavan? Who been to Vrindavan? Let us see. Raise a hand or you can unmute. Ratmatim went to Vrindavan. Very good. Who else went to Vrindavan? Samara, you went to Vrindavan? Yes, Prabhuji. You like which part of Vrindavan that you like the most? I like ISKCON the most. And other places, other natural places like obviously already there before that you like, some pastimes of the Lord
where Krishna had different pastimes that you like, that particular place? Uh, if we talk about the temples, I like the Radha Damodar temple the most. And Oh, okay. other than that, Nidhiban. Ah, so you know this picture is from where? This You is from recognize? Nidhiban only. Yeah, Uh, this picture is from Nidhivan. So Van means forest, right? And Vrindavan. So Vrinda is a name given to Shrimati Vrinda Devi. So it's a forest of Vrinda. It's a forest. Vrindavan is a forest of Tulsi Maharani. So we can see that this is a name given to the forest of Shrimati Vrinda Devi. That's Vrindavan. So another name of Tulsi is Vrinda Devi, one who awards residence in Vrindavan. So Vrinda Devi is somebody who can get, without the Ashirvad, without the blessings or Agya, तुलसी महाराज की आज्ञा से हम वृंदावन वास नहीं कर सकते. Shri Narottam Das Thakur says, Kripa Kori Koro Tare Vrindavan Vas. This is a song that we sang in the beginning by Narottam Das Thakur and say, Dear Tulsi, please bestow your mercy upon me so that I may forever reside in Vrindavan. So we get the blessings. And Narottam Das Thakur is praying to here that please, Tulsi Maharaj, please give me the blessing of having a residence in Vrindavan in your forest. And what in that forest is Vrindavan forest, which is named after Vrinda Devi, who performed 60,000 for penance there for 60,000 years in the forest itself. So वहां पे वृंदावन में क्या था कि तुलसी महारानी बहुत तपस्या की हुई 60,000 years का तपस्या की है बैठ करके. And when she was born as a daughter of the emperor Kedra, उनके पिता का नाम था केद्र, बहुत पुण्य राजा था, a very pious king that attained Goloka, और ये भक्ति पूरा का भगवान श्री कृष्ण का और गोलोक धाम प्राप्त किया. और उनकी बेटी वृंदा देवी वो भी तपस्या करके गोलोक धाम का प्राप्ति किया. So she also sanctified the forest by her tapasya. So when she performed this tapasya there, this whole forest got sanctified and she attained Goloka Vrindavan. So even since the forest has been known as Vrindavan, later Tulsi Devi, उसके बाद Tulsi Devi प्रकट हुई थी. And she came again to Vrinda in the form of Tulsi, the daughter of Kushodhwaj Raja, performed penance there and attained perfection as well. So let's see uh, the glories of Tulsi Devi. So since we talk about Tulsi, so Tulsi Devi, in the Padma Puran, there are 30 chapters describing Tulsi's appearance. तो कैसे तुलसी महारानी अपीयर हुए थे, प्रकट हुए थे. और ये जो हम लोग पद्म पुराण से ये first श्लोक that we read, वो पद्म पुराण, this was from Padma Puran, where we say that even by seeing, by touching, by hearing about Tulsi Maharani, these are different attributes we get the mercy of Krishna. So if we go back to the first shloka that we read, it was from Padma Puran. If you see the first slide that we talk about, Tulsi is auspicious in all respects, simply by seeing, simply by touching, simply by remembering, simply by praying, simply by bowing before, simply by hearing about, or simply by sowing this tree. There's always auspiciousness. Anyone who comes in touch with Tulsi tree in the above mentioned ways lives eternally in the Vaikuntha world, the spiritual world. And this is from Padma Puran, where the Tulsi's appearance has been described, and his glorious attributes are enumerated in the Vedic literature. So if someone offers Tulsi leaves at the lotus feet of Krishna, Tulsi will award liberation and devotion to Lord Shri Krishna. That's why if you have Tulsi plant, please pluck it. But remember, on Dwadashi, we don't pluck the leaves of Tulsi. जब भी द्वादशी होते हैं, एकादशी के बाद हम लोग तुलसी पत्ते को नहीं तोड़ते, अपराध होते हैं. That's why ध्यान रखना चाहिए कि पहले से तोड़े हुए या कोई गिरे हुए पत्ते को उठा करके भगवान पॉट्स में भगवान को उसको धो करके इस तरह से और भगवान के चरणों पे
उनको समर्पित करना चाहिए. So if someone offers tulsi leaves at the lotus feet of Krishna, tulsi will award liberation and devotion to Lord Shri Krishna. So Shri Krishna is very fond of tulsi, as stated in the Vayu Puran. So anybody who wants to read second paragraph? Anybody volunteer who wants to read? Samara raise your hand. Okay, Hare Samara. Krishna, Guruji. While reading, please turn on your camera, please. Hare Krishna. Yeah. Sri Krishna is very fond of Tulsi. As stated in Vayu Puran, the Supreme Lord Hari does not accept anyone's worship without Tulsi. All places of pilgrimage on this planet and in the millions of universes take shelter of Tulsi leaf. Okay. So now, one tulsi leaf. Can you remember the power of one tulsi leaf? In one tulsi leaf, all places of pilgrimage on this planet and millions of universes take shelter in this tulsi leaf. So that's why. So that shows us how Shri Krishna is very fond of tulsi. And the Supreme Lord doesn't accept anyone's worship without tulsi. That's why we always have tulsi in the worship. When we after bathing abhishek, when we do abhishek, we have tulsi leaves there. And after bathing, after dressing the Lord, we put tulsi and chandan mix. So we take tulsi and then chandan, and then we put chandan paste and then put on the place at the lotus feet of Krishna. So see, Krishna is very fond of tulsi. And the process of chanting the Hare Krishna Mahamantra, and then when we initiated, we are chanting on tulsi leaves. And then not only that, and then when we chant, it says that the process of chanting Hare Krishna Mahamantra with a vow before the tulsi plant has such strong spiritual potency that simply by doing this, one can become spiritually strong. तो इसलिए आप देख रहे हैं कि जो जप कर रहे हैं, ये हमेशा तुलसी के सामने बैठ करके जप करना चाहिए. इससे भक्ति बढ़ता है. तो हम आगे देखते हैं. तो this is a prayer for Tulsi on Shrimati Tulsi's appearance day, which is the full moon in Kartik month. In Kartik month, usually Tulsi, this is the last day of Kartik, usually when Tulsi appearance day होते हैं. Shri Krishna himself worships her with this mantra. So everybody is going to repeat after me. You can please unmute your mic, your speakers again. Your mic, can you unmute your mic so you can repeat after me? Ready? Please repeat. Krishna Jivani Krishna Jeevani Nandini Nandini Pushpasara Pushpasara Tulasi Vishwapavani Tulasi Vishwapavani Vishwapujita Vishwapujita Vrindavani. Vrindavani. Okay, there is each of the two words are being translated. So I request some of you, anyone who wants to volunteer to read if you. Yes, Prabhuji. Yeah. Yes, Vrindavani, one who first manifested in Vrindavan. Continue. Vrinda, the goddess of all plant and trees. Even if one tulsi plant is present in a forest, it can be called Vrindavan. Vishwa Pujita, one whom the whole universe worships. Pushpasara, the topmost of all flowers, without whom Krishna does not like to look upon other flowers. Nandini, seeing whom gives unlimited bliss to the devotees. Krishna Jivani, the life of Shri Krishna. Vishwa Pavani, one who purifies these worlds. Three worlds. Yeah. Tulsi, one who has no comparison. Okay. Anyone? Let me thank you, Prachi. So I'll add here. जैसे हम लोग हिंदी में होता है तुलना नहीं कर सकते. तुलना का मतलब है कि कंपेयर नहीं कर सकते. इसे तुलसी का मतलब ये है one who has no comparison is beyond comparison. हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते किसी चीज से. आप जैसे खास आप देख रहे हैं कृष्णा कितना प्रसन्न होते हैं. सारा तीर्थ जगह एक तुलसी पत्ते में है. ऐसा ये
ये मानना चाहिए कि हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते. तो anyone while worshipping Tulsi Devi chants these 8 names will get the same result as one who performs the Ashwamedha sacrifice. ये बहुत बड़ा sacrifice था, यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ. उसका अगर हम ये जो 8 नाम है तुलसी महारानी के, अगर हम जब हम तुलसी महारानी का पूजा कर रहे हैं, अगर हम लोग ये 8 नामों का उच्चारण करते हैं, तो वो एक अश्वमेध यज्ञ का बराबर आपको मिल सकते हैं, फल मिल सकते हैं. And one who on the full moon day of Kartik, Tulsi Devi's appearance day, worship her with this mantra will break free from the bonds of miserable world of birth and death and very quickly attains Goloka Vrindavan. अगर हम कार्तिक मास में और उस दिन जब पूर्णिमा के जब जब होते हैं, लास्ट डे ऑफ कार्तिक, आखिरी दिन कार्तिक का, पूर्णिमा का, कार्तिक पूर्णिमा का, अगर आप इस मंत्र के द्वारा आप तुलसी महारानी का पूजा करते हैं, तो आप एक जन्म मृत्यु का चक्र से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और गोलोक धाम वृंदावन अवश्य प्रवेश करेंगे. तो इतना पावन है तुलसी महारानी का पूजा करना, इतना शक्ति है उसमें. On the full moon day of Kartik, Lord Shri Krishna himself worshipped Srimati Tulsi Devi with this mantra. अब सोचिए, ये जो मंत्र हम लोग ने उच्चारण किया था, ये कृष्ण भगवान स्वयं इस मंत्र को इस मंत्र के द्वारा तुलसी महारानी का पूजन करते हैं कार्तिक पूर्णिमा में. The one who remembers this mantra will very quickly attain devotion to Lord Krishna, translated sweet. So आप लोग प्लीज इस मंत्र को याद कीजिए. कृष्णा जीवनी नंदिनी पुष्परा तुलसी विश्व पावनी विश्व पूजिता वृंदा वृंदावनी. इसको याद करके आप अवश्य भगवान के भक्ति मिलेंगे आपको. श्रीमती वृंदा देवी. सो वृंदा देवी के बारे में अलग अलग लीलाएं. तो we will just any volunteer who wants to read? जो पढ़ना चाहते हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं. I can read. Okay, you can leave one paragraph and then let other people read. Okay. Everybody will take one paragraph. Vrinda Devi is an expansion of Srimati Radharani, and her partial expansion is Tulsi in Vaikunta. Vrinda Devi is a very intimate associate and girlfriend of Srimati Radharani. Krishna expands as Narayan to marry Tulsi in one of his pastimes. तो वृंदा देवी is an expansion of Srimati Radharani. ये बहुत important है. जितने भी आप भगवान के जितने भी गोपियां हैं, भगवान के गोपियां हैं, जितने भी भगवान का सेवक है, मंजीरियां हैं, ये सब देवियां हैं, ये सब राधा रानी से आते हैं. ये रात रखना चाहिए. और वृंदा देवी का पार्शियल एक्सपेंशन, क्योंकि शुरुआत में वृंदा देवी थी, फिर उसके बाद तुलसी महारानी आए, तो उनका ये पार्शियल एक्सपेंशन तुलसी है, जो वैकुंठ में नारायण के द्वारा वहां पे शादी होता है. नारायण जैसे लक्ष्मी नारायण, जैसे शालिग्राम और तुलसी विवाह करते हैं, तो ये पास टाइम होता है. तो हम आगे देखते हैं. एनी हु वांट्स टू रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ? Riya, you want to read the next paragraph, Riya? Riya है? Chalo, Yes, Prachi. she is here, but no response. We don't see her. Prachi, can you read the next one? Oh, Bangari. Yes, Prabhuji. Come on. As the embodiment of the... Prabhuji, is this third? No, second. As the embodiment of the Leela Yes. Shakti. Yes. As the embodiment of the Leela Shakti, Vrinda Devi is the organizer of all the transcendental pastimes of Sri Radha Krishna. Vrinda keeps many storerooms throughout the forests of Vrindavan, along with many maid servants. She arranges the secret meeting of Radha and Krishna. हाँ, जो राधा कृष्णा का लीला होते हैं, तो ये जितने भी लीला स्थल है, जहाँ पे कुंज है, जैसे कुंज बिहारी कहते हैं ना राधा कृष्ण,
राधा माधव कुंज बिहारी, अलग अलग कुंज में भगवान का लीला करते हैं। राधा रानी को जाते हैं, रात को जा करके वो राधा रानी से मिलते हैं, फिर पूरा रात में रहते हैं राधा रानी के साथ। फिर सुबह वृंदा रानी, उसकी जिम्मेदारी है कि भगवान को जगाना और बोलना समय आ गया, सुबह अब निकलो आप लोग। तो ये वृंदा का कार्य है। उन्होंने वृंदा रानी को ये कार्य दिए हुए हैं कि जितने भी लीलाएं, उसका स्थल है, उसका अरेंजमेंट करना। और वृंदा रानी वो अनेक अनेक जगह पे सामान रखते हैं भगवान का, जो जैसे इस्तेमाल करेंगे लीला में। तो अलग अलग चीजें रखे हुए हैं भगवान के लिए इस्तेमाल करने के लिए। तो अलग अलग जगह पे लिखा है, स्टोर रूम्स थ्रू आउट द फॉरेस्ट, अलग अलग वन में अलग अलग जगह पे ये सब चीजें रखे हुए हैं। और उन्होंने उनके नीचे अलग अलग मेड सर्वेंट्स, दासियां हैं, जो मदद करते हैं ये भगवान का, राधा कृष्ण का जो प्रेमी सेवा करने का। नेक्स्ट पैराग्राफ, हु वांट्स टू रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ? माधुरी, ओके प्लीज। Vrindavan is Hare Krishna Prabhuji. Vrindavan is completely under her grace, and without her mercy, it is possible to enter the confidential pastimes of Radha and Krishna. Vrinda Devi is worshipped in two places, कामवन, Kamavana and Vrindakunda. ओके। आपने कभी वृंदावन गए माधुरी माता जी? Yes, Prabhuji. आप गए कामवन? Yes, Prabhuji. बताए थोड़ा कैसा है वहाँ? काम्यवन प्रभु जी, इसमें काम्यवन में वृंदाकुंड भी है और यमुनोत्री है, गंगोत्री है, और इसमें धाम आते हैं। जैसे इसमें एक लीला आती है, जब भगवान श्री कृष्ण के जो माता पिता थे, जब उन्होंने यशोदा मैया और नंद बाबा, उन्होंने जब कहा था कि हम चार धाम यात्रा पे जाना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा था कि आप क्यों चार धाम जाएंगे, तो आपको मैं इधर ही चार धाम की यात्रा करवा देता हूँ। तो भगवान ने इधर ही चार धाम प्रकट कर दिए थे। ओह वंडरफुल। तो उसमें हाँ जी। और वृंदाकुंड? जी प्रभु जी, वृंदा कुंड भी है, वो कुंड बना हुआ है। वो कहते हैं कि आज भी वहां पर डेमीगॉड्स आते हैं, स्नान करते हैं वहां पर। तो वहां पर हमने स्नान भी किया था, बहुत आई थिंक 5 years बैक आई थिंक। तो यमुनोत्री, गंगोत्री और एक बद्रीनाथ, केदारनाथ बना हुआ है। नर नारायण भगवान के डिटीज हैं वहां पर भी। हाँ जी, वेरी नाइस। तो आपने जब गोवर्धन परिक्रमा किए तो फिर आप गए थे वहां? आप गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे? नहीं प्रभु जी, गोवर्धन अलग है। जो अच्छा, अलग है। काम्यवन प्रभु जी पड़ता है जब हम बरसाना जाते हैं ना। ओके। तो बरसाना से पास पड़ता है वो। हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर आप जब मैं ये पूछ रहा था कि तो फिर आप पहले गोवर्धन परिक्रमा करके फिर आप गए थे वहां पे? नहीं प्रभु जी, हम लोगों को ना एक बार ऐसे ही हमारा ग्रुप था, तो माता जी थे, तो हम लोगों के मन में बड़ा था कि हम लोग चार धाम जाना है। काम्यवन लेक्चर में सुना था। तो तब हम लोग कोसी, जी हम लोग मथुरा नहीं उतरे थे, कोसी उतरे थे तो बाय ट्रेन। तो कोसी से फिर हम लोग बरसाना गए, वो पास पड़ता है। बरसाना हम लोगों ने स्टे किया था वहां पे। और फिर नेक्स्ट डे फिर हम लोग गए थे काम्यवन। फिर पूरा दिन लग गया था, मतलब होल डे ही लग जाता है आपका। तो उसके बाद फिर हमारे जो हमारे शिक्षा गुरु है इसके सरी कृपा प्रभु जी, वो भी जो ग्रुप लेके जाते हैं, 200 तक मेंबर्स होते हैं उनके। तो बसेस में सब 3-4 बसेस होती हैं, तो वो काम्यवन जाते ही हैं। मतलब 1 डे लग ही जाता है पूरा काम्यवन देखने के लिए। काम्यवन थोड़ा दूर है, आई थिंक राजस्थान में आता है, वो बाहर है। हाँ, राजस्थान, भरतपुर। भरतपुर प्रभु जी। जी प्रभु जी। वेरी नाइस। और क्या खासियत है वहां पे जो आपने देखा? खासियत प्रभु जी यही है कि क्या कहते हैं, नर नारायण भगवान के डिटीज हैं। फिर उसके बाद जो केदारनाथ, मेरे ख्याल केदारनाथ ही पड़ता है, ऊपर जाके ना बहुत सारी स्टेयर्स हैं। फिर ऊपर जाके भोले बाबा का, हाँ जी, भोले बाबा का वो शिवलिंग, पार्वती माता जी, वो सारा बना हुआ है। तो मतलब मेन ऐसे लगता है कि हम लोग चार धाम की यात्रा ही हमने की है। ओह वंडरफुल।
इसका मतलब आप जहाँ जाएंगे तो जो फिर यहाँ पर चार चले धाम जाते हैं ना, जाने उनको का चार धाम जरूरत की नहीं है। यात्रा का मतलब मिलता है, वो कृपा मिलती है। पूरा हो जाते हैं काम हाँ जी, आपका चार धाम का यात्रा पूरा हो जाते हैं। I mean, you don't need to go to the सॉरी प्रभु जी, four. आवाज नहीं आ रही। हम कह रहे थे कि you don't need to go to the 4 धाम्स, simply by going to काम वन आपका पूरा यात्रा पूरा हो जाते हैं। हाँ जी प्रभु जी, जी। इस ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो next thing is, who wants to read the next one, the marriage थैंक of यू। Vrinda Devi? Anybody who wants to read? Okay, Samara, you're present. Please go ahead. The marriage of Vrinda Devi was once organized by Srimati Radharani. Um Vrindavan is the land of Vrinda Devi, for she is the queen of all the properties, the proprietor of Vrindavan. In one pastime, Vrinda Devi offered all her kingdom to Srimati Radharani, and Sri Radha became known as Vrindavaneshwari, and Sri Radha reciprocated by arranging the wedding of Vrinda and Krishna. Krishna. Thank you. So this is very special. हम लोग राधा रानी का अनेक अनेक नाम है और एक बहुत सुंदर नाम राधा रानी का है कि श्री वृंदावनेश्वरी। सो ये ऐश्वर्य जितना भी ओपुलेंस है वृंदावन का, तो श्रीमती तुलसी महारानी ने, वृंदा देवी ने, एक्चुअली वृंदा देवी ने प्रदान किया कि पूरा जितना भी वृंदावन का जो प्रॉपर्टी है, प्रोप्राइटरी वन उनकी थी, तो सब राधा रानी को दे दिए पूरा। और इतना खुश हो गए राधा रानी के सखियों के साथ एक स्थान स्थापित करके, और नॉट राधा कृष्ण बट राधा रानी ने सखियों के साथ वृंदा देवी और कृष्ण भगवान का ऐसे मंत्र बोल करके शादी करवाया था। तो ये एक पास टाइम है, एक लीला है भगवान का, जो हम लोग इतना नहीं जानते हैं, इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोग I'm going to share my screen about Tulsi Shaligram Viva. That's the last thing we're going to talk about. So this ये मैं वो पोस्ट भी करूंगा, एक लिंक पोस्ट करूंगा इसके बारे में, और आप अगले बार के लिए होमवर्क करना है इसके बारे में कि कैसे भगवान how do we celebrate तुलसी शालिग्राम विवाह. This is very interesting celebration. हर मंदिर में तुलसी शालिग्राम विवाह करते हैं the last day of कार्तिक में। तो वो थोड़ा पढ़ते हैं, and then you guys are going to try to do something about it. So आपका एक पावर पॉइंट भी कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं, एक पोएम लिख सकते हैं, जैसे आप भी लिख सकते हैं तुलसी शालिग्राम के विवाह के ऊपर. That would be for the week, next week. So you're going to please try to find out more about that, and you can read and do some research and present पद्मावती ने something. एक क्वेश्चन भी दिया है। हाँ, आप परमात्मा जी, आप वो प्रश्न कैन यू रीड द प्रश्न पढ़ सकते हैं पद्मावती जी? पद्मावती जी, please. Hare Krishna Prabhuji. Yeah. My today's question is, summarize the importance of Tulsi Maharani in Krishna devotional life in your own words. तुलसी महारानी का, तुलसी के पौधे का कृष्ण भक्ति में क्या योगदान है, उसको अपने शब्दों में संक्षिप्त में बताइए। वेरी गुड। तो ये आपका अगले हफ्ते का मीन्स होमवर्क है, तो वो हम लोग व्हाट्सएप में भी पोस्ट करेंगे। और कोई प्रश्न है आप लोगों को तो आप कृपया करके हमको बताने ना। Any questions? तो हमारे पास कितना टाइम है हरे प्रभु? So you can take 5-10 minutes more. Yeah. 1 hour. So I have a story. I told them that story. Madri Mata ka question hai. Which shloka we should sing while plucking tulsi leaves? Okay, we'll post that shloka also on the WhatsApp. We'll post that as well, so people can have that as well.
तो जैसे आप 5 मिनट हैं तो मैं मेरा इच्छा था कि एक स्टोरी बताऊं आपको। ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरी है बरसाने का। बरसाने का मैं ब्रह्मचारी था उस समय, और दैट वाज आई थिंक इन 93 और 94, 93 या 94 के टाइम पे। तो अपनी मेरे माताजी आई थी, सो शुड बी आई वाज सिक एट दैट टाइम, सो दैट वाज 94। तो हम लोग वृंदावन ले गए थे अपने माताजी को घूमने के लिए, फिर बरसाने गए। तो बरसाने में जब गए वहाँ पे तो बहुत जब महल चढ़ करके ऊपर जाते हैं तो वहाँ एक कुंड है। आप जोर से राधे बोलेंगे तो जरूर एक राधा रानी का कृपा होंगे उसमें। हम जोर से राधा बोलना पड़ता है। एक वेल, तो उसके पास उसके लेफ्ट की तरफ एक छोटा सा मंदिर था। अब तो बदल गए होंगे, ये तो कितने साल पहले के बात बता रहा हूँ आप लोगों को। तो वहां पे एक कृष्ण के टाइम पे वहां पे एक लीला हुई थी। तो और मंदिर में आप देखेंगे कृष्ण भगवान राधा रानी का कपड़े पहने हुए हैं, कृष्ण और राधा रानी कृष्ण का कपड़े पहने हुए हैं। तो फिर क्या हुआ था, एक बार एक ब्राह्मण श्री कृष्ण के पास गए। तो ये मैंने सुना आप तो वृंदावन का राजा है, तो मैं आपके पास आया। तो मेरा बेटी का शादी है, अगर करवाना है, तो आप मदद मांगने के लिए मैं आया आपके पास। तो आप मुझे एक कीमती चीज दीजिए जो मैं दहेज में दे पाऊं बेटी के ब्याह के लिए। तो कृष्ण सोचा सबसे कीमती चीज तो मेरे तो सबसे कीमती चीज तो राधा रानी है। तो संकल्प लेकर के राधा रानी को दे दिया। अब वो ब्राह्मण बहुत घबरा गए, कह रहे हैं कि यार आप मुझे, मेरा पास बेटी ऑलरेडी है, आपने वो दूसरे बेटी भी दे दिए। तो अब तो वो बहुत परेशान हो गए, वो बैठ करके रो रहे थे ब्राह्मण। और जब सखियों ने सुना कि कृष्ण भगवान ने ऐसे किया, वो भी रोने लगे। और ललिता विशाखा को भी गुस्सा हो गए, कहते हैं ये किस अधिकार से कृष्ण भगवान ने बिना पूछ करके किस राधा रानी को दे दी है। अब सब लोग परेशान, राधा रानी भी आई रोई। तो फिर कृष्ण भगवान से बोला कि ऐसे क्यों किया। तो कृष्ण भगवान कहते हैं अब तो बहुत लेट हो गए, क्योंकि अब तो संकल्प भी हो गया, अब मैंने ब्राह्मणों को वचन दिया तो वो पूरा हो गया, अब तो कर नहीं सकते कुछ भी। तो फिर एक चीज मुझे याद नहीं आ रहा है किसने ये बात बताया, लेकिन कृष्ण ही बताया होगा, मुझे इतना याद नहीं है। मैंने एक कथा मैं वहीं पे सुना था बरसाने में बैठ करके, कितने साल पहले। तो वहां पे तो ऐसे बताया गया कि एक तराजू में एक तरफ हम राधा रानी को बिठाएंगे, और सब लोग जितने भी सोना है, जितने भी ज्वेलरी है आप लोगों के पास, आभूषण है, गहने हैं, सब ला करके हम लोग बराबर करके इसको दान दे देंगे ब्राह्मण को, फिर राधा रानी को वापस कर सके। तो ये सोचा, ठीक है ये आइडिया तो सब लोग को अच्छा लगा। सब गोपियों ने, सब लोगों ने अपना अपना कंगन, सब लोग कंगन ला रहे हैं। एक तरफ राधा रानी बैठे हुए हैं तराजू पे, और दूसरी तरफ इस कंगन लाया गोपियों ने, पूरा गांव का, पूरा बरसाने लोगों का, पूरा गोपियों सब अपने अपने गहने लाया। फिर भी वो बराबर नहीं हो रहे। अब परेशान हो गए और वो समझ नहीं रहे क्या करें कि कैसे करें ये। तो फिर एक तुलसी पत्ता एक तुलसी पत्ता डाला जहाँ पे वो सोना रखे थे, अपने कंगन में रखे, एक तुलसी पत्ता डालने से पूरा बराबर हो गया। फिर ये ब्राह्मण देवता को अर्पित किया ये पूरा धन, और वापस राधा रानी को मिल गया, कृष्ण को। तो ये एक बहुत सुंदर सा कथा है जो मुझे कितने सालों के बाद याद किया। और ये एक महत्व है इसमें, एक तुलसी पत्ता की क्या शक्ति है कि एक तुलसी पत्ता भी रखने से ये बराबर हो गया। तो ये राधा एक बहुत सुंदर सा प्रसंग है, और तुलसी महारानी का महिमा भी है।
तो ऐसे ही है, बहुत सी अलग अलग स्टोरीज हैं वृंदावन के या बरसाने में। आप लोग जरूर ढूंढना, पढ़ना और शेयर करने का। Thank you for enjoying the class today, and we'll see you guys next week so in our module next week we're going to talk about Vidura Dugramata. We will talk about Maya Devi. We'll talk about Maya Devi. ये आपका बहुत फेवरेट वन, जो बिजनेस क्लास स्टडी कर रहे हैं, ये आप लोगों का फेवरेट टॉपिक होंगे। तो see you next week. Thank you. Hare Krishna. Radhe Radhe. Hare Krishna. Thank you very much, Navin Krishna Prabhu. Thank you all Matajis. Hare Krishna. Thank you all kids. हरे कृष्णा, राधे राधे, हरे तुलसी कृष्णा महारानी प्रभु जी। की जय। Tusi थैंक यू प्रभु Maharani जी। ki हरे jai. कृष्णा। Radhe Radhe. प्रणाम।